Good evening, Namaste, Jai Guru to all. Let us begin today's class on Patanjali's Yoga Sutras with a prayer. Heavenly Father, Divine Mother, Friend, Beloved God, Bhagwan Krishna, Jesus Christ, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahashay, Swami Shri Yukteswar Ji, Beloved Gurudev, Paramhansa Yogananda Ji, Friend and Guide, Swami Kriyananda Ji, Saints and sages of all religions, great sages Ved Vyas, Maharshi Patanjali, Adi Shankaracharya, humbly we bow and touch thy feet. Dear Lord, help me to become a true yogi, so that I may feel the throb of my heart in all hearts, that I may know that my mind is one with all minds, and may I perceive myself in all motion and in the stillness beyond motion. Om Shanti, Shanti, Shanti. Let us invoke the presence of the Gurus. Let's remember Lord Krishna. Let's sing this simple chant together. Bhaj Govindam. Bhaj Govindam, 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 Bhaj Govindam,
Let's take a moment to feel the smiling presence of Lord Krishna within our hearts as we call upon his name. As Jesus Christ said, when two or more are gathered in my name, there am I. Thus, when we devotees gather together and call upon the Lord, he has to respond. It is said to receive the Lord's response in our heart. The devotee have to have the wisdom to tune into God's will and have the courage to follow God's will. So let us hear a few words on courage by Swami Kriyananda. There are three kinds of human courage: blind, passive, and dynamic. Blind courage doesn't count the cost until it finds itself faced, horror-stricken with the bill. Passive courage is the strength of will to adjust to reality, whatever it may be. And dynamic courage is the strength of will, not only to accept reality, but to confront it with another reality of one's own making. There is a fourth kind of courage, not human, but divine. Divine courage comes from living in the awareness of God's presence within, and in the realization that he is the sole reality. Live more in him, for nothing and no one can touch what you really have. Let us do the following affirmation, loudly, softly, then mentally. I live protected by God's infinite light. So long as I remain in the heart of it, nothing and no one can harm me. I live protected by God's infinite light. So long as I remain in the heart of it, nothing and no one can harm me. I live protected by God's infinite light. So long as I remain in the heart of it, nothing and no one can harm me. Mentally offer this prayer. I look to thee for my strength, Lord. Hold me closely in thy arms of love. Then, whatever happens in my life, I shall accept with joy. Om Shanti, Shanti, Shanti. Good evening once again, dear friends, and welcome to today's class on Patanjali's Yoga Sutras. Last class, we finished the first book or the first main chapter of Patanjali's Sutras. That was the Samadhi Pada, in which he described the various stages of Samadhi. And he did describe a few ways in which one can reach Samadhi. Now we are going to start the Sadhana Pada. This also gives very, very specifically the ways, the day-to-day life changes that we need to bring about to go towards that state of Samadhi, which he has described in the first chapter. But before we go into that, I'd like to narrate a story of the King Janak, Raja Janak. So it is said that once a mendicant asked him, why do you think, King,
You are so fulfilled and complete in this life? And we know that Raja Janak's name has been taken and mentioned in many scriptures, including the Bhagavad Gita. He is known as the Brahmagyani. He is also known as the Karma Yogi. And we know that he was a king and emperor. So the mendicant asked him, how and why is it that you are an emperor, you are an enlightened being, that you are the father of the mother of the universe, and the Lord himself is your son-in-law? How is it possible that one person can attain so many things in life? And Raja Janak is pondering upon this question, and he sleeps as he's pondering upon this question. And then in his dream, he kind of, in his dream, he's getting up and he's walking to a place, and there he finds a person sitting under a tree. And there he asks him, why I want to know how come I have all these things in life. So he's also wondering, although he's a Brahmagyani, but yes, of course, these stories are made so that people can understand and reach to that level. So he asks that person sitting under the tree, and in the dream, that person says, okay, you must start walking towards the west. After a few days, you will reach a place where you will find in a forest, sitting under a tree, a person doing sadhana, and he will be feeding only on dry leaves. So Raja Janak starts walking towards the west, and after a few days, as promised, he reaches a forest where under a tree this person is sitting. He's a yogi, but he's eating dry leaves. So Raja Janak approaches him and asks him this question, that this is what I want to know. Somebody told me that you will have the answer to my question. So the person says, okay, why don't you rest, king? You rest today, and tomorrow maybe I will tell you. So the next day, when they wake up, and the yogi tells me, actually, I do not have the complete answer to your question. So it would be better if you walk further westwards. And there you will, after some time, few days, you will reach a person whom you will find again in sadhana, who is going to be smeared with ashes and is going to be feeding on ashes as well. So he will have the answer to your question. So Raja Janak keeps walking westwards. And again, after a few days, he reaches such a person. He finds this person sitting there and feeding on ashes. And again, he puts his query in front of him. I want to know that how come, everything can be attainable in one life, which has been attained by me. I want to know the background of it, how I have come to this point. And the person in the ashes again tells him, why don't you rest, king? Maybe tomorrow morning, I will reveal to you the answer. So the next morning again, this person says, I do have partly some answer, but if you want the complete answer, you need to walk further westward, and you keep walking. After a few days, you will reach a village. In that village, a lady would have given birth to a newborn child, and that newborn child actually, he can actually speak. He will be able to speak to you, and he will be able to tell you the mystery that you are seeking. So of course, these are stories and we do not need to take them literally, but the essence of it comes later. So the king keeps walking westward, and then of course he reaches a village, and there he finds a house in which there is a newborn baby. And of course, the people realize that he's the king, so they kind of bow to him, and he requests that he have some time alone with the newborn baby, which the parents comfortably allow. And so when they are alone, then the king presents his query to the little child, and the little newborn replies in Sanskrit, and he tells Raja Janak about the whole thing. So then he goes on, he tells Raja another story. He says, many years ago, there was a famine in this village, and there was a widow who had 4 sons. And since there was a famine, there was nothing to eat, and everybody was dying around. The survival had become very, very difficult. And the widow was finding it really hard to feed her children. And all the children were between the age group of 4 and 11 years. So they could not feed for themselves, fend for themselves. So the mother had to arrange something for them. After a lot of struggle, the mother was able to arrange enough dough so that she could make 4 chapatis out of it. So that she did. She made 4 chapatis, and she gave 1 each to all of her children.
Now, as soon as the food was served and the children were about to take their food, a guest appeared on the threshold, and he said, "I'm very hungry. You have to give me something to eat." The mother said, the mother herself had not taken anything. She had not eaten anything for days. She said, "I have nothing to give to you. All I had, I have already given to my children, and now you may not ask me, but if you want food, you need to ask them to have to share their food with you. If they give, it's well and good, but you have to ask them. I have no right over that food now." So that guest, and in India we know that we consider, it is said that guest is God, although modern living has kind of changed the whole scenario to a bit. But yes, guest is God. That's what we've been taught according to the Upanishads. So it is important that the guest be fed, but the children are very hungry. So the guest goes to the eldest son and says, "Child, will you share your food with me?" And the child is so hungry, he says, "I'm not going to share. I'm so hungry. What do you think? I'm going to eat leaves if I share my food with you." So that is the boy you met, the person who sits under the tree, does his sadhana and eats his leaves. That was the boy. The second child is then asked, the guest asks him, "Can you please give me your food?" And the child says again, "No, what do you think? Am I going to eat ashes then if I give you my food?" Then the child says, "And that was the person whom you found who was smeared in ashes and was eating ashes." And then you ask the third child that, "Can you share your food with me?" And the third child said that, "If I share my food with you, I will die." And that is me, the little baby, the newborn is saying that ever since that day, I have been born so many times, but I have died the same day. And today also, I will die again. And said the fourth child, when he was asked, when the guest asked the fourth child, the youngest, he was 4 or 5 years old, that would he share the food with the guest? And the child offered that chapati roti to the guest, and soon after the child died. And that child is you, or King Janak. You are that child. And that is why you have all that you need, and you are the emperor, and you have the Lord and the lady in your house, and you are also enlightened. So such is the power of karma. So it's tough to relate to this story and certain aspects, but it is not so tough on the other aspects. So of course the stories are made in extreme content, so that when the Puranas were written, that means the teachings of the Vedas were given to the people in the form of stories. Such stories were set as examples, but we can take the essence of it. And I would just like to read a little bit, not just mention here. I was reading some Jain scriptures, and they talked about karma also. And they said that karma can be classified into 4 categories. One is shubh karma. So that means you are enjoying prosperity in this life, you are enjoying respect in this life, you have health, you have family, you have loved ones. So kind of you're having a good life right now. And that is because of the good karma that you did in the past. Okay. So this is a nice life, but you build on this good karma. You create more good karma in this life, and then later that kind of enhances. So, and that goes to the limit of, to the point where you realize that you do something called a tirthankara karma, means Jainism considered the enlightened ones as tirthankars, and that would eventually lead you to enlightenment. And so, for example, they say that, you're born, you're a king in this life, and then you are a king because you did some good karma in last life, but now you do even more good karma. You serve others, you do charity to others, you protect the weak, and then next life you become a Chakravarti Samrat. And then when you become a Chakravarti Samrat, you continue to do good, and then you also develop detachment from the world, and you have self-control. You do not seek the pleasures of the senses and so on. When you do that, then you become enlightened. Such was the state of Raja Janak. He was a Samrat, and he was an enlightened being.
So this is Shubh Karma. So why I am reading this? So that we check upon ourselves, what are we doing in our life? The second time is the Ashubh Karma, auspicious, inauspicious. So that means you're having a good life right now as a result of the prarabdha, means what you initiated earlier, and you're comfortable right now. But you do not use this opportunity to build new karma, but instead you just let away the time, the energy, the resources you have to go towards bad things. You kind of become an addict to something, you're obsessed with certain things, you're always into sensual pleasures, you have become selfish over a period of time, you're hoarding more and more wealth. So that will eventually cause the good karma that you had previously to go further down and down, eventually to a point where it will become ashubh, and then negative karma will start to build up. So this is shubh ashubh. Then the third category of karma is ashubh shubh. So now there are certain people who are having a difficult life right now. And this could be because of whatever past, mathematically past karmic results it could be right now. But they practice so much of self-control. They are so steadfast on the spiritual path, and they slowly develop dispassion towards the world, and they develop the love of the Lord, and they do all the right things as described by the scriptures. Eventually, they can rise so much in this life. So they although it started from a ashubh karma, but they create so much of positive karma in this life that they end up, being raising themselves higher on the karmic ladder. Eventually, even all karma has to be given up, but they tend to bring their miseries they turn the obstacles into opportunities, and they move towards enlightenment. So that is ashubh shubh. Now, for example, Angulimal, he had so much of ashubh karma, but in one moment in the company of a saint can transform us. So one moment in the company of the Buddha completely transformed his life, and then he attained merit in this life, which he could, use later or share with others, or use it to go towards enlightenment. So this is all possible. And the final is ashubh karma. So means you're already engrossed in bad habits, and you're leading a miserable life. You don't have prosperity, and you don't have even, mental peace is not there. So at all levels, you have poor bodily health, you do not have mental calmness, no abundance in your life. So you're struggling in this life, and that is because of the past karma. But you continue to do the same because you have no impetus, no attraction to take you towards higher realms. So you continue to be obsessed and addicted, and you stay in those zones, and it takes you further and further down into those whirlpools. And you know the law of magnetism, you can keep going down there. And that is ashubh karma. And that kind of guarantees that you lead a hellish existence for this life, next life, and so on. And eventually, although whenever the rock bottom happens, eventually people have to rise up. So the destiny of every soul is to merge back into the infinite, is to be one with God. And eventually, however bad we may become, God never leaves us, and he brings us back and takes us there. But if we do not put our effort in our life, then millions and millions of lifetimes, that's what mentioned in the Bhagavad Gita, it takes millions of lifetimes to set yourself free. On the other hand, हमारा कर्मा पुराना शुभ है या अशुभ है, इसको हम भूल जाए यदि, और इस प्रेजेंट मोमेंट पे अपने पूरे जान प्राण और मन लगाकर यदि स्पिरिचुअल पाथ पे स्टेडफास्ट हो जाएं, तो अब से हम शुभ कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, और वो शुभ कर्मा इवेंचुअली हमें एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगा, जहां हमने शुभ अशुभ से भी ऊपर उठना है, जहां हमें त्रिगुण रहितम बनना है. तो ये हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम अपने आप में हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करें और ये समझें कि हमारी दिशा क्या है. क्या हम हाई एनर्जी एरियाज में जा रहे हैं या हम लो एनर्जी जोन्स में जा रहे हैं, हम सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं या हम सब कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं. हमारी कंपनी कैसी है, हमारी कंपनी बहुत ज्यादा वर्ल्डली कंपनी है, या क्योंकि वर्ल्डली कंपनी इवेंचुअली आपको बॉन्डेज तक लेके जाएगी, या हमारी कंपनी थोड़ी स्पिरिचुअल कंपनी है जो हमें फ्रीडम तक लेके जाएगी. क्या हम जो म्यूजिक सुनते हैं वो हमें again it takes us into zones of darkness, like
deep rock music and all of that will take your energy down? Or are we listening to spiritual music? When we are reading books, are we just reading the Time magazine, or we are just watching some pictures of models here and there, or are we actually reading the scriptures which are going to take us towards freedom? So at every point, every second of the day, sometimes we must make a choice. In fact, all the time we must make a choice between the preferable, the right thing, and the pleasurable. So all the karma is actually decided in these two choices. If one has to leave the pleasurable, at least in a graded manner. We are not saying that सब कुछ छोड़ दीजिए और कल ही जंगल चले जाइए, ऐसा होने वाला नहीं है. So on a daily basis, when you get up in the early morning, for example, you have to decide that do I keep staying in the bed and sully and relax, or do I get up and do my spiritual practices? It's a small decision. And then again, on a Sunday morning, do I just be lazy and hang around with friends, or actually I go for satsang, I go do my meditations and so on? So it's a choice that we make almost every moment of our life, and we have to decide between the pleasurable and the preferable. कभी कभी ये दोनों साथ में होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जुदा मार्ग होते हैं, और उस समय हमारे लिए ये डिसीजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेंस प्लेजर में जा रहे हैं या हम प्रेफरेबल टुवर्ड्स फ्रीडम यानी कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं. एंड समटाइम्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज जस्ट बीइंग बाय योर ओन सेल्फ. सो ये हम डिसाइड करेंगे. और जैसे कि पतंजलि ने समाधि पद में कहा था कि आपकी प्रैक्टिस माइल्ड है, मॉडरेट है या इंटेंस है, यही डिसाइड करेगी कि आप कितनी जल्दी वहां पहुंचते हैं. तो ये अगेन इट इज आवर डिसीजन. This is the only choice we have. Only choice, Master said, you either go towards God or you go against God. This is the only karmic choice that we have actually in every moment. तो जितना भी हम pleasurable की तरफ और टाइम पास की तरफ जाएंगे, हम सबकॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं और हम away from true joy जा रहे हैं. We are going away from our own Atman into the world. And जितना भी हम preferable, doing the right thing, what is our dharma right now in this moment, जितना उधर जाएंगे उतना हम गॉड की तरफ जाएंगे, फ्रीडम की तरफ जाएंगे, एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे, अपने आत्मिक सेल्फ की तरफ जाएंगे. हम भी ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं. जितने भी ह्यूमंस हैं सभी ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मन उनमें ऑलरेडी ही है और ये हमें सिर्फ रियलाइज करना है. और इसलिए अब हम साधना पाठ पढ़ेंगे, जिसमें पतंजलि हमें हर सूत्र में बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि हम अपना कर्मा जो है इनिशियली उसको मॉडिफाई कर सके और इवेंचुअली कर्म से भी परे जा सके. सो वी रीड द फर्स्ट सूत्र ऑफ साधना पद, दैट सेज तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग. Tapa means tapasya or ascetic practices. Swadhyay means study of the self. Now, many people think it's a self-study or study of the scriptures. So it can start, Swadhyay can start from study of the scriptures, but eventually it means the study of of myself, of the Atmic self, of who am I really. Then Ishvara Pranidhan means surrender to God. Kriya Yoga here is not specifically meaning the technique of Kriya Yoga given to us by the masters, but means the root word of Kriya is Kri, which means action. So means doing all those actions which will take us towards the state of yoga. So that is what is meant here. But painful purification and training of the senses, the study of the self, and surrendering to God. So some say Ishwar Pranidham is complete surrender to God. Some are simply saying surrendering the fruits of action to God. So however you may take it. And surrendering to all of this is coming under Kriya Yoga. So doing introspection, doing your tapasya, means painful purification, and surrender. All of this is Kriya Yoga. Tapasya or discipline or some form of austerity is to remove the impurities of the senses. It cleanses the senses. But austerity does not mean torture. Austerity means rather a simple life. तो ऑस्टेरिटी में हमने कई बार देखा है कि इंडिया में ऐसे कई तपस्वी हैं
जो नेल्स के बेड्स पर लेटते हैं, या वो खड़े रहते हैं, या एक हाथ रेज करके रहते हैं, या वो एबनॉर्मल योगासन्स में रहते हैं और सालों साल रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डिसएडवांटेजियस है, इसके अपने एडवांटेजेस होते हैं, इससे कुछ कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि तपस्या में अगर योगी को जो भी सिद्धि प्राप्त हो रही है उसमें वो ये इस चीज में फंस जा रहा है कि ये मैंने किया है, ये मैंने पाया है, तो वो उसकी तपस्या जो है उसको बॉन्डेज की तरफ लेके जा रही है, फ्रीडम की तरफ नहीं लेके जा रही। बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर, इन ऑल थिंग्स गॉड इज द डूअर, ऑल द पावर्स बिलोंग टू गॉड। यदि आपकी तपस्या जो है आपको मोक्ष की तरफ लेके जा रही है, मैं से मोक्ष, मोक्ष किससे है? दुख से मोक्ष। दुख से मोक्ष कैसे होगा? जब मैं से मोक्ष होगा, जब ये लिटिल ईगो को हम छोड़ देंगे, हमारी सफरिंग वैसे ही सारी खत्म हो जाएगी। तो जब अगर हमारी तपस्या हमें मोक्ष की तरफ लेके जा रही है तो वही सही तरह की तपस्या है। और यदि वो हमारे अंदर मैं की भावना को बढ़ा रही है तो वो तपस्या जो है वो विफल है, वो कहीं ना कहीं आपको वापस डिल्यूजन में फंसा सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, स्वामी जी सेज accepting pain as purification, study of the scriptures and introspection, openness to the divine will and guidance, and accepting them, these constitute the practice of yoga. Now, when we are talking of studying about the self, we know that Swamiji has explained it, as you start by watching your own thoughts, watching your own emotions, and you should apply whatever you have read in scripture, you have to contemplate upon it and apply it in your own life. How does this apply to me? And for that, Swamiji gives beautiful, simple examples as to how to follow this. Swamiji says, if someone insults you, why insult him in return? Why take that karma on your own shoulders? Instead, introspect first and see whether in some way you have merited that insult. So do not react immediately. There's one song in which Master says, when praise is sweet and blame a dream, when thy song flows through me, my Lord. So when we are in a position to accept everything coming from the Lord, then even when blame is coming, even when insult is coming, we needn't react. We can pause, we may contemplate upon it, and then sometimes even express gratitude, because sometimes the other person is pointing to some problem in our own subconscious, which is not in our conscious mind, but somewhere hidden in the subconscious there is a problem, there is some unfulfilled desire that we have, or some attitudinal problems that we are not ready to face right now, but the other person kind of just insults us. So we need to just pause, look within. Secondly, Swamiji says, if someone tries to hurt you, ask yourself, what might you have done to attract this ill will? So again, इसके लिए भी हमारे पास स्टोरी का क्या एग्जाम्पल है? जब बुद्धा की लाइफ में somebody came and just spat on his face and Buddha never reacted, and the next day Buddha explained to that person was restless throughout the night thinking what had happened. The Buddha explained to him, the next person, that whatever happened to me was somewhere initiated by me, and if I now react to you, whatever you do, again we will restart a karmic cycle. So he does not react to that. Now again, reminding, we are not doormats and we should not behave like doormats, but instead of reacting, we need to respond intelligently, and there is no need of anger in every situation because it's a useless thing. So again, we need to pause, we need to introspect, and then we need to respond appropriately. The first thing is to watch your own reactions. This is what Swamiji is saying. If your reactions to life are right, everything will flow smoothly. You will not obtrude your ego onto everything, and therefore distorting the perception of reality. तो आपका राइट रिएक्शन में क्या स्वामी जी कह रहे हैं कि हर चीज को अपने मैं पे नहीं लेना,
मेरे साथ ऐसा क्यों, why did this happen to me, why is everybody bad to me, why is the world so bad to me, why am I so suffering so much. So आपको विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं जाना है, विक्टिम कॉन्शियसनेस पूरी मैं के अराउंड ही वर्लपूल बनाती है. सो आपको उसी से ही अपने आप को विड्रॉ करना है, एक थर्ड आई व्यू लेना है कि व्हाट इज ट्राइंग टू हैपन हियर. So whenever something confusing is happening around you, go into your center, withdraw a bit from the situation and ask, what is God trying to do here? What is God wanting to teach me through this situation? And then you will find that you needn't jump into it, you needn't react to it, but just learn from the essence of it. What is it that God wants to tell us? The first and the most important thing on the spiritual path is to overcome all attachment to ego. If someone slights you publicly, then be grateful in your heart for his reminder that you are not important in the great scheme of things, and that your real task as a child of God is to minimize your importance in everything. It is the most vital importance, it is of most vital importance to your own spiritual progress and to your own lasting happiness to get out of the cage of ego consciousness altogether. If people get angry with you, then ask yourself first whether you yourself are at fault. So यहाँ पे बहुत नेगेटिव इमोशन स्वामी जी ने पॉइंट आउट करी हैं और ये हमें अपने आप में चेक करना ही है. लेकिन साइड बाय साइड अगर ब्लेम की जगह कोई प्रेज कर दे तो क्या हम चने की झाड़ पे चढ़ जाते हैं और हम कहते हैं वाह वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं तो कितना महान हूँ, कितना ग्रेट हूँ. तो उसमें भी उतनी ही प्रॉब्लम है. जितनी ब्लेम में डिप्रेस होने में प्रॉब्लम है, उतनी ही प्रेज में एक्साइटमेंट में प्रॉब्लम है. सो दिस कॉइन वर्क्स बोथ वेज. तो चाहे कोई प्रेज करे या कोई ब्लेम करे, आपको संभाव में रहना है. आपको ना एक्साइट होना है ना डिप्रेस होना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है और रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली करना है. It is important for us to accept pain in any kind even mindedly. That is the best way to overcome it. So here is a key that Swamiji is giving. किसी भी पेन को एक्सेप्ट करना जो है वो उसका बेस्ट वे है फर्स्टली ओवरकम करना. इवन माइंडेडली एक्सेप्ट, ओके दिस इज द सिचुएशन. जो डिनायल मोड में चले जाते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे साथ, वो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि ये सिचुएशन है, दूसरे पर्सन के साथ ये है, मेरे सिचुएशन अंदर ये है. आई एक्सेप्ट दिस रियलिटी एंड देन what can I work upon? I cannot work upon the other person, but I will work upon myself. Pain is a universal experience for all mankind. For some, the pain is intense. For others, it is relatively minor. The pains we endure are a karmic balance for pains we have inflicted on others. So, karma is a mathematical law. So, definitely, या तो हम सब कुछ कर्मा से रिलेटेड माने या कुछ भी ना माने, पर अगर हम अपनी ही लाइफ या सारी वर्ल्ड की लाइफ देखते हैं तो कर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें एवरीथिंग देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम. इन द रिलेटिव वर्ल्ड कॉज एंड इफेक्ट से ही आगे चलता है सब कुछ. तो इसका मतलब आज हमें जो पेन हो रहा है इट्स एन इफेक्ट. इसका कॉज कभी पास्ट में था और वो कॉज हमसे ही शुरू हुआ था. जब एक ईगो से जो प्रॉब्लम निकल रही है वो उसी ईगो तक वापस आने वाली है. Something that you have released into the ether is going to mathematically come back to you. So that is why you have to think कि maybe even if you cannot understand it, even if you don't remember your past lives, which is the case with most of us, is you have to accept that somewhere it would have been started by me. That means you take the responsibility of all your actions. And that is not only bondage, that is also soul freedom. Because now you know that everything is in your hand. That means you are responsible for what you are doing right now, what you are thinking right now, what you are speaking right now. क्योंकि इसका इफेक्ट बाद में आने वाला है. तो क्या आप आज एक सूफी सेंट की मैं स्टोरी पढ़ रही थी एंड वो अपने डिसाइपल्स को ना सिर्फ एक ही बात बोलते थे, दो बातें राधा बोलते थे. एक तो जप करने को बोलते थे इन देयर वे, और सेकेंडली बोलते थे किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल में भगवान रहते हैं. तो अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे, प्रेम से रहोगे,
तो the universe will give you the same energy that you have given. The universe is in fact is like a soundboard. It magnifies, it amplifies whatever you give it to it. So आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे तो आपका भी दिल कोई नहीं दुखाएगा. And try and test this. As your relationships improve, because spiritual journey में कई relationships improve होते हैं because of the sense of forgiveness, acceptance, less judgment and all of that. You will realize that this is true. और अगर फिर भी ऐसे लोग अभी भी हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान, जिससे आप परेशान हो रहे हो, ask in your heart and mind, ask for forgiveness from the Lord and connect to their soul from within, and maybe you can ask for forgiveness from them, and you will find, and you can do the peace and harmony prayer with them. Lord, fill them with peace and harmony, fill me with peace and harmony. You will find things start to dissociate. जो उनका प्रॉब्लम बिहेवियर है वो चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपने अपने हार्ट से अब लव की एनर्जी, पीस एंड हार्मनी की एनर्जी आपने वो एमिनेट करनी शुरू कर दी उस डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली जब वो रिटर्न आएगी एनर्जी तो वो चेंज हो जाएगी. ट्राई एंड टेस्ट दिस. आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ. People whom I found very difficult at certain points in my time, in my life, I prayed for them. I prayed that the Lord fill them with love and peace and harmony. I prayed that God help me to love them. And slowly over a period of time, things changed. So all of these are very, very practical teachings. The law of karma is very much true. And that means the happiness, the success of our life lies in our own hand. The success of our towards movement towards enlightenment also lies with us. Of course, the Guru and God are there always, but the 25% effort of the devotee has to be actually 100% giving. Let us also remember that karma does not oblige us to suffer. It merely obliges us to experience the ups and downs that we've caused to others. अब कर्म को मिटिगेट किया जा सकता है, बहुत तरीके हैं कर्म को मिटिगेट करने के लिए, और उसमें से एक है ईश्वर प्रणिधान, जो इसमें इसी सूत्र में बताया गया है. तो ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से हम अपने पुराने अशुभ कर्म को बदल सकते हैं. अगर हम आज राइट एक्शन करते हैं, राइट इंटेंशन रखते हैं, राइट थॉट एंड राइट स्पीच करते हैं, तो हमारा पुराना कर्म जो है वो मिटिगेट हो जाता है. प्लस यदि हम आज ये जानने लगते हैं कि गॉड इज द डूअर, तो भी हमारा कर्म मिटिगेट हो जाता है. यदि हम भक्ति भाव से भगवान को अप्रोच करते हैं और हम उसके प्रेम और फॉरगिवनेस सीख करते हैं, तो भी हमारा जो पुराना कर्म है वो मिटिगेट हो जाता है. और यदि हम ज्ञान योगा के मार्ग से जाते हैं और हम ये जानने लग जाते हैं कि हम ईगो तो है ही नहीं, हम तो सोल सेल्फ है, हम तो आत्मन है, आत्मन का तो कोई कर्म होता ही नहीं है, तो उससे भी हम कर्मा से फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं. और राजयोगा जो हमारा मेडिटेशन का पाथ है, उसमें क्योंकि हम अपना आत्मिक सेल्फ को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो उससे भी हम कर्म से फ्री मुक्त होने लगते हैं. और क्रिया योगा मास्टर ने कहा है कि वो हमारे एक्चुअली सारे जो सीड्स ऑफ कर्मा हैं उनको बर्न कर सकती है. सो ये सभी मार्ग हैं जिससे हम सभी कर्मों से, अच्छे भी और बुरे भी, सभी कर्मों से मुक्त हो सकते हैं. और हम उसको कितना अपनाते हैं, कितना करते हैं, वो हम पर निर्भर करता है. सूत्र 2, समाधि भावनार्थ क्लेशनुकरणस्य. Meaning, samadhi, we know the word samadhi itself. Bhavana means to practice or to cultivate. Arthat means for the purpose of. Klesha is pain or impurity or obstacle. Tanukarana is to cause weakness, and artha is for the purpose again. Okay, so the practice of yoga minimizes the impurities and helps in attaining samadhi. Swamiji says in these ways means the ways which were mentioned in the first sutra, Ishvara Pranidhan, Swadhyay or Tapasya. In these ways our obstacles become minimized. We should always try to be aware that as souls we are ever perfect. हम आत्मा हैं और ये आत्मा ever perfect है, इसका कोई कर्मा नहीं है. It is when the soul identifies itself with the body. जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम केवल ये शरीर हैं या केवल ये मन है या ये पर्सनालिटी है, तब हमारा कर्मा आने लगता है. लेकिन हम जब मेडिटेशन द्वारा हम ये जानने लगते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हम अपने कर्म से मुक्त होते जाते हैं.
God created this delusion of separateness in the first place. तो कहीं ना कहीं it is said that it is because of delusion जो हमें ये thoughts आते हैं या हम जो कर्म करते हैं, वो sense of separateness God ने create करी है. Yes, की है, लेकिन God ने हमें intelligence भी दी है उससे मुक्त रहने को. If we do not use our sense of discrimination, यदि हम विवेक का अपना इस्तेमाल ही ना करें और ये जान ना लें, ये जानना कोई बहुत मुश्किल नहीं है. अगर आप सारी दुनिया को देखें तो ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है कि सेंस प्लेजर्स जो हैं इवेंचुअली आपको प्लेजर भी देना बंद कर देते हैं. हाँ, प्लीजिंग लगते हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन यू नो देयर इज दिस इंग्लिश पोएट, आई थिंक सोमरसेट मॉगम, he wrote, if you single mindedly pursue pleasure, everything will stop pleasing you. So ये बहुत आप खुद ही सोच के देखिए कि आप अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम अच्छी लग रही है, ठीक है, फर्स्ट बाइट अच्छी लग रही है, दूसरी अच्छी लग रही है, तीसरी अच्छी लग रही है, लेकिन उसके बाद यदि आपको कहा कि अब आप 10 आइसक्रीम में खाओ, तो उसमें कोई प्लेजर नहीं है, उसमें पेन है. तो indulgence in sense pleasures actually eventually will give you pain. Why? Because it will take away your energy towards the outside world. It will drain you and it will take you away from the truth. You will only live through the body, through the senses, और आप ये भूल जाओगे कि एक 6th sense और 7th sense भी होते हैं जो एक्चुअली आपके ट्रू गाइड्स हैं. तो क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे. प्रॉब्लम क्या है सेंसेस को यूज करने में? क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो और आपका इसलिए आप अनहैप्पी हो, क्योंकि योर इनर सेल्फ इज द सोर्स ऑफ ऑल जॉय. योर आत्मन इज सच्चिदानंद, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल जॉय. The more outward you go from there, the more unhappy you are going to be. So that is the problem with sense pleasures. So ये जो है ये देखना कोई बहुत मुश्किल नहीं. यदि हम अपना विवेक, अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करें, औरों का जीवन भी देखें, अपना भी स्टडी करें, तो ये बातें हमें समझ आने लगेंगी. प्लस स्वाध्याय से, यानी कि स्क्रिप्चरल स्टडी विद इंट्रोस्पेक्शन, जब हम इसको कंबाइन करें, आप जितने भी स्क्रिप्चर्स उठा लीजिए, सभी यही कहते हैं, ओवर इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लेजर्स इज यूजलेस, इट्स पेनफुल. Master said it leads to moodiness and disgust. So all of the scriptures will say the same thing. अब उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो तब हम अगेन हमारे पास वो चॉइस आ जाएगी कि हमें प्लेजरेबल पिक करना है या हमें प्रेफरेबल पिक करना है. हमें राइट थिंग चूज करना है जो हमें अपवर्ड लेके जाएगा, या हमें बस प्लीज होके थोड़ी देर टेम्परेरीली और फिर उसको खत्म कर देना है. एवरी टाइम देयर इज अ चॉइस विद अस. And when we say that God created delusion, so we have intelligence. So that means, now I heard one of Devi Ji's talk. She said, the first time your mind receives a bad idea, it's usually not your fault. But if you entertain that thought again and again, if you indulge in that, if you catch on to that thought and start thinking bad for others, then it is your karma. So watch. Satan is going to play. Satan is a reality. It's a reality of this universe that there is both good and evil. As long as we are living in a world of duality, there is going to be good, there is going to be evil. The evil influence is also very, very powerful. It knows कि आपकी क्या कमी है, आप कैसे टेम्प्ट होगे, उसको टेम्प्ट करना आता है आपको. अगर आप जेलस रहते हो थोड़ा भी, तो आपके जरूर ऐसे नजारे दिखाएगा आसपास जिससे आपकी जेलसी बढ़ेगी. तो यहाँ पर आपको बहुत ही वॉचफुल रहना है. योगी को बहुत अलर्ट रहना है कि उसके मेंटल स्काई में क्या थॉट्स चल रही हैं और वो किन थॉट्स के साथ प्ले कर रहा है. हाउ मेनी थॉट्स इज ही फीडिंग एंड विच काइंड ऑफ थॉट्स ही इज फीडिंग. We know the story in which the father tells the son that whichever wolf you feed is going to become stronger. तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स के वुल्फ को फीड करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, यदि आप पॉजिटिव थॉट्स के वुल्फ को फीड करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा और फिर वही जीतेगा. तो अगेन चाबी हमारे पास है. इंट्रोस्पेक्शन और विवेक हमें डेवलप करना है. हमें अपने थॉट्स के बारे में अलर्ट रहना है. हमें डिसाइड करना है, आई शुड बी द मास्टर and decide which thought I am going to think. Why should the thoughts rule over me? They should not. I should decide what I want to think, how much of it I want to think, in which direction I want to take my thought. एक सारथी, एक रथ की तरह. मन सेंसेस के घोड़े, मन के घोड़े तो भागेंगे ही. अगर आप मास्टर हो तो आप उन सबकी रेंज को अपने हिसाब से दिशा दोगे. और हम सबको मालूम है हमारी इवेंचुअल दिशा जो है वो एनलाइटनमेंट की तरफ है. तो अभी हमारी ड्यूटी बन जाती है, हमारी राइट भी है और हमारी ड्यूटी भी है कि हम उन सभी हॉर्सेस को अपने अंडर कंट्रोल लाएं
और जितनी टेक्निक्स हमें दी गई हैं उनका प्रयोग करें। The Bhagavad Gita makes an important point that one cannot get out of karma simply by not acting. One who lives in the body is forced to act even by the fact that he must breathe. Those who try not to create more karma by simply not acting become dullards. वो और डल होते जाएंगे, डल मतलब तमस में जाते जाएंगे, तमस मतलब और अशुभ कर्मा वो एकत्रित करते जाएंगे. It is very necessary, therefore, that we act energetically for the good. Vivekananda ji said, you have to be very active for God to attain that actionless state. Sutra number 3. Avidya asmita राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश. अब इस सूत्र में उन्होंने 5 क्लेश बताए हैं पतंजलि ने, जिनको ऑब्स्टिकल्स या इम्प्योरिटीज कहते हैं, जो हमारे अंदर हैं. और जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं होते हैं हम उनको बड़ा नेचुरल मानते हैं और सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, बट एक्चुअली ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, ऑन द पाथ टू एनलाइटनमेंट एंड फ्रीडम, ये ऑब्स्टिकल्स हैं. और ये क्या है हम अभी समझते हैं. अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, asmita means I-ness, egoism, rag is attachment or likes, dvesh is aversion or dislike, abhinivesh is clinging to bodily life. So Swamiji says the 5 pain bearing obstacles are ignorance, egoism, attachments, aversions, and clinging to bodily life. A little note from Swami Vivekananda, he says ignorance is the mother of all the rest. If you don't have the right knowledge, the other impurities or obstacles get stronger and stop your progress. For example, if you do not know that egoism यानी कि अस्मिता आपकी सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है, तो आपको आप कभी उसको एक्सपेल नहीं कर पाओगे और कभी भी आप स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं पा पाओगे. सो अविद्या और अस्मिता जो है वो इकट्ठे होकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करते हैं. क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम ये लिटिल ह्यूमन बींग्स हैं, लिमिटेड हैं, इतनी ही हमारी पावर है, इतना ही हमारा जीवन है, दैट्स इट. ये हमें उस सत्य से परे लेके जाते हैं जो कहता है कि हम इमॉर्टल हैं, हम कभी मर नहीं सकते और हम ये शरीर नहीं है. तो जब मृत्यु आती है तो केवल शरीर की मृत्यु आती है, आत्मा की नहीं आती. हम नहीं मरने वाले, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम इटर्नल हैं, इटर्निटी से हैं. हमने अलग अलग रोल प्ले करे हैं, अभी हम ये रोल प्ले कर रहे हैं, आगे जाके कोई और रोल प्ले करेंगे, वो फ्री होंगे, क्यों नहीं होंगे. तो ये इस सत्य से जो दूर लेके जाए वो है अविद्या, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कॉज. और फिर अस्मिता यानी कि मैं, आई एम दिस लिटिल बीइंग. Swamiji says again, also he says, ignorance in the spiritual sense has nothing to do with lack of book learning or intellectual knowledge. ये हमने पिछले पाद में लास्ट में 2-3 वर्सेस में करा था, जिसमें पतंजलि बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो बाकी सेक्युलर ज्ञान से फर्क होता है. तो बुक लर्निंग से जो नॉलेज आप एकत्रित करते हैं वो अलग होती है, और जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आप गेन करते हैं वो अलग होती है. तो जब यहाँ अविद्या की बात हो रही है तो अविद्या ये नहीं है कि आप इलिटरेट हो. इतने सारे हमारे सेंट्स रहे हैं जो एबीसी में तो इलिटरेट रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी रहे हैं. तो वो एक अलग प्रकार का ज्ञान है जहां जिसकी बात हो रही है, और वो ज्ञान है जो हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा. जो इस दुनिया का ज्ञान है वो हमें मटेरियल सक्सेस तक लेकर जाता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो हमें मोक्ष तक लेके जाता है, और वो एक अलग होता है. वो हमें हमारी अविद्या दूर करता है, और अविद्या दूर करने के लिए हमें गुरु की रिक्वायरमेंट होती है. गुरु का मतलब ही होता है डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस. और कौन सी डार्कनेस की बात हो रही है? यहाँ डार्कनेस ऑफ अविद्या और अस्मिता की ही बात हो रही है. ये इतनी गहन अंधेरा है ये अस्मिता और अविद्या का, कि इसको गुरु की हेल्प के बिना रिमूव नहीं किया जा सकता. और इसीलिए वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट गुरु who's taken responsibility of our life. Okay. With asmita, Swamiji says, with egoism we tend to take ownership of our actions. हमें लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं. We become attached to the fruits of our actions. अब अगर हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें ही प्राप्त होना चाहिए. We start desiring a better outcome of our actions. यानी कि हमारी expectations भी और बढ़ जाती हैं. Or else we feel hatred towards the impediments that are against the fruit. ठीक है. So overall
we basically start to cling to life, to this earthly life more and more, क्योंकि और डिजायर होगी तो और जन्म लेने पड़ेंगे उसको पूरा करने के लिए, फिर उसमें एक्सपेक्टेशन भी आ जाएगा, उसमें फलों की इच्छा भी आ जाएगी, और ये एक साइकिल निरंतर कभी टूट नहीं सकता। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। राग और द्वेष, अटैचमेंट्स एंड अवर्जन्स आर मेजर ऑब्स्टिकल्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। व्हाई? बिकॉज वो हमें आईनेस से बाइंड करते हैं। आईनेस तो प्रॉब्लम है ही। अब आई जो है वो कह रहा है आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। जो करना है वो हम कर नहीं रहे क्योंकि हमें पसंद नहीं है, और जो नहीं करना वो कर रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है, मतलब प्लेजरेबल की तरफ जा रहे हैं। राग और द्वेष से हम तब उठ सकते हैं जब हम प्लेजरेबल को छोड़ के प्रेफरेबल की तरफ, यानी कि अपनी धार्मिक ड्यूटी की तरफ जाएंगे। More than food, things, scenery, etc., it is people who arouse in us attachment and aversion more powerfully. ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है कि लाइक्स और डिसलाइक्स चीजों से धीरे धीरे उतनी नहीं रहती, पर लोगों से कुछ हद तक ज्यादा रहती है। When we allow ourselves to become involved with others emotionally, we set up criteria in our minds that make us attached to certain persons and make us dislike others who do not meet that criteria. तो अब हमारे मन में एक लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि अगर एक पर्सन ऐसा 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 होगा तो हमें पसंद आएगा, और अगर ऐसा 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 होगा तो हमें ना पसंद आएगा। लेकिन वी फॉरगेट अगेन, हम अविद्या में जी रहे हैं, that he is as much a child of God as I am. I also have my own idiosyncrasies and likes and dislikes. He has his own patterns, and we are all looking for that same happiness. उस बात को हम भूल जाते हैं और बस हम एक हरा लाल नीला चश्मा अपने अटैचमेंट और एवर्जन का लगा लेते हैं, जिससे हमें दूसरा बंदा या तो लाल नजर आता है, तो नीला नजर आता है, तो हरा नजर आता है, बस पसंद नहीं आता या कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। और जितने, अब नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितने लोगों से आप पर्सनल लेवल पे बहुत क्लोज आओगे उनसे उतना ही दूर जाओगे, क्योंकि ये डुअलिटी है। इवेंचुअली मैथमेटिकली स्पीकिंग आप, हमारी मूवमेंट जो है वो स्टिलनेस की तरफ, एब्सोल्यूटनेस की तरफ जानी है, जीरो। तो यदि किसी से ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो उससे ज्यादा एवर्जन भी होगा। इसीलिए इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है टू इम्पर्सनली लव एवरीबॉडी। किसी से भी इतनी पर्सनल अटैचमेंट ना रखें, क्योंकि फिर एवर्जन भी आने वाला है। कोई ज्यादा पसंद आ रहा है ना सुपरफिशियल लेवल पे, पर्सनालिटी वाइज, तो वो अगले दिन नापसंद भी आने वाला है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फैक्ट है, लेकिन ये ट्रू है, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। जब एक दिशा में जाएंगे तो इसको जीरो करने के लिए वापस तो आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसका तोड़ सिंपली ये है, लव ऑल इक्वली फ्रॉम एन इम्पर्सनल लेवल। एंड इसको फंक्शन करने में जो लहरी माशे ने कहा था वो बड़ा यूजफुल है। आई प्रैक्टिस इट many times, and this is what he said: remember, I belong to no one and no one belongs to me. This is the truth. We have come alone. This is our own personal journey. जितने लोग हमारे आसपास हैं, हम उनसे रिश्ते बनाएं, प्रेम पूर्वक बनाएं, लेकिन उनको अपना ना समझने लग जाएं कि ये तो मेरा है और इसलिए इसका बिहेवियर जो है वो मेरे थॉट पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी जर्नी है। ये सोल्स इस लाइफ टाइम में इकट्ठे हुए हैं, एक परिवार बने हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और आपका कोई नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं, हमारा कोई नहीं है। हम खुद अपने हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये बातें हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड करानी पड़ेंगी, नहीं तो भटकना बहुत आसान है। मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी चीजें, कुछ भी मेरा नहीं है। जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ साथ नहीं जाने वाला है। मेरा क्या है? गुरु मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, और द सेल्फ आत्मन, मैं आत्मा हूं। इस बात को यदि हम रोज याद करें तो हम डेफिनेटली फ्रीडम, हम फ्रीडम की तरफ क्या जाएंगे? हम फ्री, हम इसी मोमेंट में फ्री हैं। that I am that I am a lover of God, I am a child of God, I am free in this moment. What do I need? स्वामी जी ने चैंट लिखी है ना, ब्यूटीफुल, I need nothing, I am free in myself, I am free, I own nothing, I am free. Then he says I need no one and I own no one. तो सबसे प्रेम करें, लेकिन किसी को मेरा है मेरा है मेरा है कहने की चेष्टा ना करें, क्योंकि उससे आप ही को परेशानी होने वाली है। क्योंकि आपका कुछ है नहीं, आप एक अनट्रूथ में बिलीव कर रहे हो। आपने अपने आप को उसमें बांध लिया है, अनट्रूथ में इतना वो एक कोकून बना लिया है, और उसी को आप सच मानने लग गए हो अपने, स्पेशली विद द चिल्ड्रन।
The Divine Mother is the mother of all. Those children have come into your life to show you how you can love others. यदि बच्चों से हम प्रेम ना कर सकें, अनकंडीशनल लव हम केवल बच्चों से ज्यादा कर पाते हैं, तो वो यही सिखाने आते हैं हमें इस जीवन में. और मास्टर कहते हैं सिर्फ एक या दो से ऐसा प्रेम ना करें, हर पर्सन से आप ऐसा प्रेम करें, और तभी आप लिबरेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि यही सच है. So we'll just finish this sutra in a moment. And then Swamiji says, we should accept calmly whatever is. This practice is particularly important when it comes to anything that affects us, especially pain and pleasure, both pleasant and unpleasant experiences. Sickness causes mental suffering. Learn to accept with an even mind whatever comes, whether it is the bodily sickness or not. You have to accept it and you have to be calm through it. पेन है तो पेन में रोना आएगा ही, लेकिन अंदर से दिल शांत है कि नहीं है. अब या दिल इस विक्टिम कॉन्शियसनेस में जी रहा है कि मुझे ही क्यों दर्द हो रहा है, सारी दुनिया को दर्द है भाई, नानक दुखिया सब संसार. इस बात को एक्सेप्ट कर लें. दर्द केवल मेरा नहीं है, दर्द एक यूनिवर्सल फिनोमेनन है. हाँ, इस समय मेरे शरीर में दर्द है, ये अपने आप को डिटैच करें बॉडी से, एक्सेप्ट करें. हाँ, शरीर में दर्द है, परेशानी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जो दवाई लेनी है वो करना है. दैट इज माई ड्यूटी टुवर्ड्स द बॉडी दैट आई हैव बीन गिवन, बट दैट्स इट. अंदर से अपने चित्त को शांत रखें. Swamiji said, Swamiji was so ego free. In fact, master ने Swamiji को एक बार कहा था that ego, you will not never be troubled by the ego. And Swamiji says, I have long made it a practice never to pray for myself and never to defend myself. यानी कि कोई insult कर रहा है तो मैं अपने आप को defend नहीं कर रहा हूँ. You can say what you want to say. I am what I am in my heart. Swamiji says, why should I ask for anything different for what God is giving me? I'm not saying don't pray for yourself, but I'm saying the more you can get above the I-ness, the more happy you shall be. Also, when good fortune comes, accept it with a calm, grateful thought of God. In this way, whatever experience comes to you, that will only increase your inner joy. And the last point of this sutra is abhinivesha, attachment to the physical body. This is a universal delusion. However, it is also universally recognized that we are not going to live forever in this body. So be wise and start detaching yourself from your body from now on. Remember each day that this body is not going to be there with you for a long time. The reason people reject physical death is that they know in their souls that their actual demise is an impossibility. They must certainly will live forever. They are confused, however, because the minds confuse life with the physical body. क्योंकि हम इस बात को conditioned हैं, हम ये सोचते हैं ये शरीर ही हमारा जीवन है, इसीलिए हम मृत्यु से डरते हैं. नहीं तो मास्टर क्या कहते थे, मृत्यु निद्रा के समान है. It's just like when you go to sleep, you're not tense that, oh, I'm going to sleep. Similarly, in death is like another form of sleep. You just shed your body and you're still there. We cannot die. We are the light itself. We are life itself. It is we who enliven these bodies that we live in, but we are not the bodies. Let us come to this truth again and again and again, till the time every fiber of our being knows this truth, and that is the state of self-realization. So with that thought, my dear friends, let's just take a moment to share the power of these teachings. May all souls be uplifted in the light of the Lord, and may these obstacles be shed from each seeker's path. Let us pray together. Divine Mother, thou art omnipresent. Thou art in all thy children. Manifest thy healing presence in all bodies, all minds, and all souls. Oh. Oh.
Divine Mother, may thy love shine forever on the sanctuary of our devotion, and may we be able to awaken thy love in all hearts. Om Shanti, Shanti, Shanti.